Good morning to everyone. Welcome back to our online class. So ninth class we have done in Zoom class we have done up to colloidal solutions. In colloidal solution we have studied what are the colloidal solutions, what are the component of colloidal solutions and the type of colloidal solutions. We have discussed there only the 4 type of colloidal solutions, and I told you have rest of you have complete from your NCERT book. So we start with the Tyndall effect, which is left in between in the Zoom class. So I will start from the Tyndall effect. So all of you, most of the students, you know about the Tyndall effect. Tyndall effect, Tyndall is not any, you can say Tyndall is the name of a scientist. The scientist who discovered that effect, that is a Tyndall effect. So एक्चुअली टेंडल इफेक्ट में जो साइंटिस्ट था उसने क्या डिस्कवर करा, सिंपली इट इज अ टेंडल इफेक्ट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट. अब लाइट कब स्कैटर करती है? ऑब्वियस है जब लाइट तभी स्कैटर करेगी व्हेन सम पार्टिकल्स कम इन बिटवीन द पाथ ऑफ लाइट. सो जब ऐसे पार्टिकल्स लाइट के पाथ में आएंगे तो लाइट क्या करेगी? इट स्टार्ट स्कैटर्ड. So for example, normally you have see the when the dark you can say when we enter in the dark room or light entered in the dark room, what you have seen the path of a light. So that is a type of a Tyndall effect. So canopy of trees, again the example of that Tyndall effect. So this is a very important characteristic property of the you can say colloidal solution. So we can differentiate 3 type of solution on the basis of this effect also. So here if I talk about true solutions, then suspension, and there is a colloids. Now in true solution, what are true solutions? In which particle size is very small. ठीक है, बहुत छोटा होता है पार्टिकल साइज. We cannot see it with the naked eye. Example is salt in water. Fine. So true solution, when you add a salt or a sugar in water, after some time it is completely dissolved. So the solution become clear. Solution कैसा होता है? Clear. ठीक है. So that's why when the light is passed through this, you cannot see the path of light. इसमें हम लिख सकते हैं there is we cannot see path of light. ठीक है. लेकिन अब हम सस्पेंशन पे आ जाएं. The particle size is little bit bigger than the particles of true solution. So when light is passed through it, it strikes with the particles and you see a small Tyndall effect in the suspension. But we went to come to the colloidals. The particles are intermediate between true solutions and suspension. ठीक है. तो जब पार्टिकल साइज इंटरमीडिएट है, आप कह सकते हो द पार्टिकल इज नॉट बिगर एज सस्पेंशन बट नॉट स्मॉलर एज ट्रू सोल्यूशन. तो यहाँ से जब लाइट पास करेगी इट शो द मैक्सिमम Tyndall इफेक्ट. सो हाउ कैन वी डिफरेंशिएट दैट? इन यू कैन से द ऑर्डर ऑफ Tyndall इफेक्ट इज maximum in colloid. So colloidal solution show the maximum Tyndall effect. So this is all about the Tyndall effect. Now we start with another topic, that is physical and chemical changes. As physical and chemical changes you have studied in your previous classes also. So almost same type of definition, same type of content is about the physical and chemical change. Physical change and there is a chemical change. Now physical change, how can we say that कि physical change means जब किसी कंपोनेंट के फिजिकल पार्ट्स के अंदर, फिजिकल पार्ट्स मीन्स
यू कैन से जो फिजिकल कंटेंट है उस सब्सटेंस का, उसमें जब चेंजेस आते हैं, यू कैन से देयर इज़ अ फिजिकल चेंजेस. फॉर एग्जांपल, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, या किसी लिक्विड का या सॉल्वेंट का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, या किसी कंपोनेंट की डेंसिटी चेंज हो रही है, देन वी से द चेंजेस आर अ फिजिकल चेंजेस. और केमिकल चेंजेस के अंदर द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस गेट चेंज. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं देयर इज अ change in physical content. Example, temperature, volume, density and much more. And in chemical change, there is a change in chemical composition. For example, if I take out the ice cubes from the fridge, now ice cube means it is made up of water, so there is a water in the form of ice cubes. तो ice cubes कैसी होती हैं? Solid. But अब if I keep at a room temperature, अब मैंने इसको कहाँ रख दिया? रूम टेम्परेचर के ऊपर. After some time, water get melt. जैसे ही वाटर की मेल्टिंग स्टार्ट होगी, आइस की मेल्टिंग स्टार्ट होगी, इट चेंजेस इनटू द लिक्विड पार्ट. सो इज देयर एनी चेंज इन द फॉर्मूला ऑफ वाटर? वो रहेगा क्या? H2O ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आया है. इसमें चेंज आया है स्टेट के अंदर. यहाँ पे स्टेट कैसी थी? सॉलिड. और यहाँ पे स्टेट कैसी है? लिक्विड. सो दिस इज अ टाइप ऑफ अ फिजिकल चेंज. लेकिन अगर हम यहाँ पे केमिकल चेंज की बात करें, तो केमिकल चेंज में हम क्या कह सकते हैं? एग्जाम्पल, जैसे आई हैव टेकन अ पीस ऑफ एन आयरन. ठीक है, आयरन का पीस लिया मैंने, आई केप्ट इन द एयर, मैंने एयर के अंदर रख दिया उसको. ठीक, अब आयरन का नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है? Fe. एयर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा? देयर इज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्लस वाटर वेपर्स. फाइन. अब जैसे ही आयरन वाटर वेपर्स या इस एयर के साथ रिएक्ट करेगा, इट चेंजेस इनटू Fe3O4, यानी कि ये क्या बन जाएगा? आयरन ऑक्साइड. यानी कि आयरन की क्या हो गई? दैट इज रस्टिंग. क्या हो गई? रस्टिंग. तो रस्टिंग क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ अ केमिकल चेंज. क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया? सिंपल आयरन एलिमेंट था, वो एलिमेंट एयर के अंदर जो वाटर एंड ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, इट रिएक्ट विद दैट टू फॉर्म द न्यू कंपाउंड दैट इज अ आयरन ऑक्साइड. सो इट इज अ टाइप ऑफ अ रस्टिंग. सो रस्टिंग क्या है आपके लिए? इट इज अ केमिकल चेंज. फाइन. सो इस तरह से हम फिजिकल केमिकल चेंज को डिफ्रेंशिएट करते हैं. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज, एज ऑल ऑफ यू know that physical changes are what type? Physical changes are reversible, but chemical changes are irreversible. Once there is a change on chemical composition, you cannot reverse that reaction. ठीक है, लेकिन physical changes में आप उसे क्या कर सकते हो? You can change it. ठीक है. So this is little about physical and chemical change. Here we only discuss the examples of physical and chemical changes. So let me discuss or start with the example. For example, there is melting of butter. Fine. Butter जब melt करता है, तो what happen? Is there any change in the composition of butter? No. Only butter get melt and you kept it again inside the fridge. What happen? It again become hardened. Fine. So that is a physical change. Then stretching of rubber band. Now if I took the rubber band and I stretch it more, fine, what happened? The rubber band get stretched to the maximum. As I apply the force, जितनी मैं force apply करूँगी, it stretched to at that limit. But when I leave that rubber, it again regain their shape. So it is again the type of a physical change. Then there is a cutting of trees.
अब हम ट्री को कट कर रहे हैं, तो क्या ट्री कट करने से इज देयर एनी चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन? नो, ओनली दैट ट्री गेट कटेड, दैट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ अ फिजिकल चेंज. ऐसे ही देयर आर द टाइप ऑफ केमिकल चेंजेस. केमिकल चेंजेस के अंदर अगेन जब कंपोजिशन टोटली क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल. अब जब हम कैंडल को बर्न करते हैं, व्हाट हैपन, देयर इज अ विक, फाइन, दिस विक, दिस इज अ विक, फाइन. सो कैंडल में क्या बर्न करता है, दिस विक गेट बर्न. When this wick get burned, it produce carbon, and that carbon when react with oxygen present in the air, it form CO or CO2, depending कि there is a complete combustion or a incomplete combustion. So burning of candle is a type of a chemical change. Then as I told you, rusting is also a chemical change. So this you can say these are some examples. So I will discuss one question here in which you are more clear about the physical and chemical changes. So first is classify the following changes into physical and chemical change. ठीक है. सो अगर हम क्लासीफाई करें तो लेट्स सी. फर्स्ट इज बॉइलिंग ऑफ वाटर. बॉइलिंग ऑफ वाटर into steam. It is a physical or a chemical change? Yes, it is a physical or a chemical change. It is, now look here, if I take again water that is in a liquid form and I heat it, water is changes into the gaseous form या फिर हम कह सकते हैं water vapor, क्योंकि स्टीम में क्या होते हैं, there is a water vapor. So यहाँ से liquid state से it changes into the gaseous state. So what you have, is there any change in the composition of water? No. So this is a type of a physical change. Fine. Then we come to the melting of wax, candle wax. Now this is a candle. Fine. Now when this wax get melt, so is there any change in the composition of this wax? No. Only the wax get melted, and if it start, you can say after some time it automatically what happen? It start become hardened. So that wax is again used for the candle purpose. So melting of wax is also a type of a physical change. Fine. Then more example. Then we come to, as I already discussed, cutting of trees, melting of butter. So there is one rusting is also a type of a, it is a chemical change. So okay, now next example is burning of paper or wood. Now tell me, is this a physical or a chemical change? Burning of paper, it is a chemical change. Why it is a chemical change? Because when paper get burned, what is burning? The carbon present in the paper is burning. So when that carbon it react with oxygen, it form CO2 or Cu. Fine. So there is a change in the chemical composition कि new substances form. Physical change में कोई नई substance नहीं बनती है, but यहाँ पे दो elements combine करके they form the new substance. So we can say that this is a type of a chemical change. Fine. So now I'm going to write one question and you have to do that question yourself.
but with reason. That is your homework. Classify the following changes into physical and chemical change, and you also have to give reason. Okay, first is drying of shirt in the sun. Then second, rising of hot air over a radiator. Then third, burning of kerosene. Then churning of milk cream to get butter. You take the screenshot of this question and you have to do yourself, but you also gave the reason for each of the change. Fine. So I will send the screenshot of the assignment on the on group, and the notes which are related to the Zoom class plus the notes of this topic. I again send you the screenshot. Thank you.